Good afternoon, Bhushan. Good evening, everybody. Am I audible, visible? Jain, sir. Jain. Jain. Yes, sir. Audible and visible, sir. Sure. And a very good morning, sir. Hey, good evening, sir. तो बेसिकली आज हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, अब मतलब काफी कुछ आगे पढ़ेंगे, बट स्पीड डिस्टेंस टाइम जो हम लोगों ने स्टार्ट करा था, स्पीड डिस्टेंस टाइम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, आई होप यू गाइस मेड अ रिवीजन ऑफ कि जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, एवरेज स्पीड से रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं, और जो रेशियो का कॉन्सेप्ट जो पिक्चर में आता है कि किस तरीके से हम लोग उसको इजी कर सकते, ठीक है ना। वो देखो नया थॉट प्रोसेस है, आप लोगों ने आज तक हो सकता है ऐसा सीखा हो, ना सीखा हो, आई डोंट नो, बट दैट इज द बेसिकली थॉट प्रोसेस दैट यू हैव टू अडॉप्ट। 26 सितंबर है आज, और ये सब टाइम टेबल चल रहा है, 9 बजे 3 बजे जी के 5 बजे। तो बेसिकली क्या है, देखिए, कीप योर माइक ऑन मी, अपने माइक को शांत, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दिया, ठीक है। सबसे पहले अब हम ट्रेन की कहानी पढ़े, इससे पहले देखो ट्रेन का कुछ समझा देता हूं, रफली समझा, there is always some train of length L, got my point? It will cross another train, another platform, another person, another pole. It will cross two type of objects, stationary and moving. Train will have some speed. The stationary object will have a speed 0. Moving object will have some speed s. 2 points again. If the objects are in same direction, speeds will subtract. If they are in the same opposite direction, speed will add. Remember these. Train, stationary, moving, same, opposite, length. Whatever the object we will have, object will be of two category again. Having some length L2. Train will always have a length L1. Train will have a length L1. Another object will have length L2. What object will have a length L2? Another platform, another train, another bridge, or anything else. There will be some another object having length 0. Like say for example, men, pole, like this, जिनकी कोई लेंथ नहीं। तो सबसे पहले मेरे को एक बार ब्रीफ अप करने दो फिर से। ट्रेन होगी जिसकी लेंथ L1 होगी, स्पीड S1 होगी। दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होंगे, स्टेशनरी एंड मूविंग। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स विल हैव अ स्पीड 0 because they are at the stationary position, they are not moving. Moving objects will have some speed S2. Same objects, same direction, so speed ka difference. Opposite, so speed will add up. Another object will be having some length
L2. L2 length will be a platform, train, bridge, or have another objects like man, pole, person, anybody, tree, they will have a length. ये थोड़ा सा नोटेशन है जो आपको याद है, थोड़ा सा ये सीख जाओ. सर यू आर लुकिंग लाइक सीनियर. पुलिस का फॉर्म आने वाला है, मुझको अप्लाई. अब तुमने ऐसा कहा है I will now come into the khaki uniform. चलो. So what I was saying, कहना क्या, तुम मेरे लुक से ज्यादा नहीं इन लुक्स पे काम करो. तुम मेरे लुक्स को मत देखो. क्या कह रहा था, सारा फ्लो तो हो गया तो. हाँ, तो ये नोटेशन याद रखना, ठीक है ना. अब सुनना आगे की कि एक बेसिक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. दिस इज वेरी बेसिक फॉर्मूला. नाउ कंपेयर stationary objects. Now read with me. Time taken by the train to cross a pole and the standing man. आप लोग just like a singham. He is standing at somewhere. खतरों का खिलाड़ी वो डरता नहीं है ना, तो यहाँ से ट्रेन आ रही है. Man will have a length 0. मैंने अभी बताया. Train will have some length L1. When will you consider this thing that train has passed the जब ये इस तरीके से आगे मूव करते 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 यहां पर आ जाएगी ट्रेन. दैट इज ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर करा, अपनी ही लेंथ है. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन टाइम. यू हैव टू फाइंड length if the length 1 plus length 2. length 2 stationary object है. stationary object है तो सॉरी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट करो. मैन है तो उसका मैन है पोल है तो उनकी लेंथ 0 होती है, तो L2 ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा. डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो फॉर्मूला लगा रहे हैं. तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, अपनी लेंथ. द डिस्टेंस नीड टू बी कवर ओन लेंथ ऑफ द ट्रेन. स्पीड, pole, men, they don't have any speed, they are stationary, so only the speed of a train will be considered. Let me brief you. Come here. Time taken by the train to cross a bridge or platform. This is the length of a train. There's some platform, bridge or somewhat like this, L2. Train again will pass. So when will be considered? The train ने पास कर लिया, पहले अपनी लेंथ पूरी कवर, फिर पोल ब्रिज की पूरी कवर, यहां तक आएगी लास्ट. ट्रेन यहां पहुंच गई. सो लेंथ ऑफ अ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ अ ब्रिज और प्लेटफॉर्म और एनीथिंग, सिंस ब्रिज और ब्रिज is stationary, so only a speed of a train will be taken. Just remember one formula: time, distance upon speed. Time, distance upon speed. Distance is how much. If there is a pole, man, there is a length will be 0, so only train length will be there. Since they are stationary, so no length, so no speed is there. So speed is only of a train. For the bridge and platform, both the length will be add up, and the speed is only of a train. Come here next. अभी देखना, सुनना, पूरा सुनना, फिर then I will take your doubts. Moving objects with respect to train. When they are moving in the same direction, time taken by the faster train to cross the slower train. Now, this is a one train. This is another train, L2. They are moving in the same direction. L1 is moving, L2 is moving. They are moving in the same direction. They have to cross. So both the trains' length will be taken. दोनों को add करना. Since they are moving in the same direction, so S1 minus S2. When they are now when they are moving in the opposite direction, again length of both opposite direction, sum of their speed, S1 plus S2. Now come again.
moving object with respect to men when they are moving in the same direction. Look, here's a length of a train only. Men, it is also moving, but length of a man is 0. There's no length. So length of a train will be taken only. Length of a speed of a train is S1. Speed of a man is S2. When they're moving in the same direction, so subtract. When they are moving in the opposite direction, so add. Let me recall everything. When there are the two things having some length, add them. Add. Just add them. When there's only one object, another object is having length 0, only one object. When the one object is moving like a train, so only the speed of a train. When the both are moving, so distance difference कर देना और add कर देना opposite और same direction. कुछ नहीं याद रखना, बस इतनी चीज। बताओ, what is your doubt? Sir, a length of a man will be always 0. Yeah, of course. What is your length? You don't have any length. You are just this one. Sir, if instead of man there will be platform or something else, then Sorry? sir, instead of man, if there will be something else, then If there is a something, then the length will be given. I have just told you, na, men, pole, tree, these are having length 0. They are totally negligible length. okay, sir. Okay. If there is some bridge, platform, ये तो क्या था? कहाँ थे तुम? सो रहे थे क्या? ये तो क्या? ये तो बताया अभी. L2, if there is a some object, platform, train, bridge, there is a some length. Men, pole, they don't have any length. What my point? Have you got it or not? Got it, sir. Got it, sir. Yeah, next doubt. हिंदी में एक्सप्लेन थोड़ा हाँ, हिंदी में बस ये याद रखना है, हिंदी में हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, बस ये बात याद रखनी है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अगर डिस्टेंस क्या है, बस अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो लेंथ 1 ले लो, और 2 ऑब्जेक्ट है तो उन्हें ऐड करो. इतना याद रखो. एक ही ऑब्जेक्ट मूविंग है तो स्पीड खाली एक ले लो. 2 ऑब्जेक्ट मूविंग है और सेम डायरेक्शन में, सब्ट्रैक्ट कर दो. और 2 ऑब्जेक्ट मूविंग है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस चीज को याद रखो. ठीक है जी, कुछ नहीं करना आपको, बस इतना सा फॉर्मूला याद है. यहाँ सारे क्वेश्चन इसी में. लुक वेरी क्लियर. How long does a train 90 meter long running at the rate of this take to cross महात्मा गांधी स्टैचू की लेंथ 0 होती है, प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है, पैरेलल ट्रैक ये सब गिवन है. जहां पे गिवन है वहां पर यू हैव टू कंसीडर, अदरवाइज नाउ कम हियर. Train of a length this 90. Now most important thing is this. Speed 1. First convert it into meter per second. How to convert it into a meter per second? This 18 3s are, so 3 5s are 15 meter per second. Got it? Now, time. Mahatma Gandhi statue, no length, only train length. L1. L1. और खुद की स्पीड होगी बस, no other speed. So 90 upon 15. 15 90. This one here 120 meter long, so 90 L1 plus L2. L1 plus L2, platform no speed, only speed of a train, so 90 plus 120 divided by 50, it will be 210. It will be a 16 seconds. Sorry, not 16, 14 seconds. ठीक है जी. Next, another train 150 meter long standing on parallel track. Since it is standing, no moving, so speed 0. L1 plus L2, only speed of a first train. So 90 plus 150 divided by 90. How much time? 240. 240 divided by 90, 40 divided by 90 would be
240 15, sorry. Speed of the train ना, so 240 divided by 15, ये आ जाएगा तुम्हारे, ये आ जाएगा 16. Another train this long running at this in the same direction. अब इसको convert करो पहले. Convert this. 36 किलोमीटर पर आवर. 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करोगे, so it would be 10 मीटर पर सेकंड. So it would be 10 मीटर पर सेकंड. Time L1 plus L2, both the train length, same direction, so S1 minus S2. Since S2 is S1 minus S2. Since S1 is larger, so S1 minus S2. If S2 is larger, then S2 minus S2. Basically, difference need to be. L1 is 90, L2 is 160, S1 is 15, S2 is 10. So it would be 250 divided by 5, that is 50 seconds. अब इसमें अपोजिट, अब देखो लोग बस इसमें 160, इसका टाइम और देखो बस. L1 plus L2, then the opposite direction, so S1 plus S2, S1 plus S2, that is 90 plus 6, 160, 250, S1 plus S2, that is 15 plus 10, 25. 25 से काटोगे, so 10 seconds. ये अभी तक हमने E तक करा है, आगे और तक. ये E का आंसर है, ये D का आंसर है, ये C का आंसर है. You got now whatever written. ये थोड़ा सा हैप्पीजार्ड तो नहीं हो गया? Means it's very congested. I feel. If someone not got, let me know. अगला, man running at this in the same direction, man running at this in the opposite direction. देखो, अब man जो another running है, उसकी स्पीड तो कुछ है, ठीक है ना? सॉरी, स्पीड है, लेंथ कुछ नहीं. अब सबसे पहले तो आप इसको कन्वर्ट करो. 6 किलोमीटर पर सेकंड को आवर्स किलोमीटर पर आवर में लेके जाओ. 5/3 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड. कितना टाइम लगेगा? L1 only the speed of only the length of a train, same direction, so add up. Opposite direction S1 minus S2. So length of a train is 90 meter. यहाँ पर है 15 plus 5/3. यहाँ पर आ जाएगा 90, 15 minus the 5/3. So it would be 90 upon into 3. 3 5 is a 15, 3 is a 45, 45 plus 5, 50. यहाँ पे देख लो, 90 into 3, 45, 45 minus 5, 40. कितना टाइम लग गया यहाँ पर? 9 3 is a 27, 27 upon 5 seconds इसमें लगेंगे, और इस वाले में 27/4 seconds. Simple. तो सेम डायरेक्शन वाला कौन सा? ये F का आंसर है, ये G. So simple. किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट करना है? बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन इन द सेम यूनिट. यहाँ पे मीटर है, मीटर में चलता है, याद रखना. किलोमीटर के साथ आवर की यूनिट चलती है, और मीटर के साथ मीटर पर सेकंड की यूनिट चलती है. किलोमीटर पर आवर है यहाँ पर, इसको मीटर पर से, यहाँ पर ये लेंथ मीटर में है, तो उसको किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर में करना होता है, मीटर पर सेकंड. सिमिलरली किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना. सो सेम वो चलते यूनिट, तो सेम यूनिट को चलते. सो रिमेंबर दिस कोड एग्जांपल, ये पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड है, जिससे आपके सारे टाइप के हो जाए, सारे के सारे टाइप इसमें कवर हो गए. और बस यही था. अब हम चलते हैं आगे के सवालों की तरफ. अगला सवाल,
Two trains of equal lengths are running on a parallel tracks in the same direction at this speed. The faster train passes the slower train in 36 seconds. Find what is the length of the train. So now they are asking the length of a train. Time, distance upon speed. Two trains equal length moving on a parallel track, same direction. Now L1 plus L2, since both are of equal length, so we can take L or L. Same direction है, so S1 minus S2. Now बहुत देखना जरा ध्यान से. Time 36 seconds. L plus L 2L. Speed is 108 minus 36. Since it is in kilometer per hour, इसको भी convert करना पड़ेगा meter per second. So you will get the length in a meter. So यहाँ पे कितना आ जाएगा, बस इसको देख लो, 18 में से 36 गए तो 72 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा, ध्यान से देखने की एक स्टेप, is equals to 12 72 into 5/18. So 18 4s are 2 2s are 2 5s are 10 10, you take it there, 360 meters. This is your length of 360. Length of the train is 360. Length of the train is 360. Next. A train this in length travels at this. How much time does the train take in passing a man walking at this against the train? Train this length travel at this. How much time does the train take in passing a man walking this against the train? मतलब ये तो same सा ही होगा. But time निकालना है. Length लेगा only the length of a train. Against the train means then the opposite direction. Got it? So S1 plus S2. So 110, 6 plus 6, T plus 6. Now again then the kilometer per hour, again we have to convert it into meter per second by 5/8. So 1 1 10 18 पर यहाँ पे 66, यहाँ पर 5. 11 से काटोगे तो 10 पर, 11 से काटोगे 6, 6 3s are 18, 5 2s are 10, 2 3s are 6, 6 seconds. Next topic is boats and streams. So you all must aware of the concept of river rafting. River rafting में क्या होता है, आप लोग just pack with your jacket, life jacket, sit in the boat, you pedal, and the river is at peak. Okay, it's a very challenging. You have to be mentally calm. It's a very exciting process. So वैसे से कुछ है, boats and stream. So remember only one thing, that there will be some stream. There will be a water, river, moving or flowing, having speed, y. Upstream, downstream is the condition of river. Upstream going against the flow, downstream going with the flow. Means in the downstream, your boat and the stream both are in the same direction. In the upstream, boat and stream are in opposite direction. Still water, it implies that speed of water is 0. Generally, you see that it's a situation where water is speed is 0. Now, how we have to take the conditions of the speed. Speed of a boat in still water. Suppose there is some lake and there is a boat. Water की speed is 0 and you alone pedaling it means in the water. Speed of a boat in still water x, speed of a current is y, speed of a boat in same direction, that is downstream. Downstream की effective speed add up since both are moving in the same direction. Now
that is reciprocal to that one. When you are in the train condition, when you are in the same direction, then you subtract. When you are in the same direction, that is downstream, you add up. Boat and stream both got added. X plus y. Opposite stream, upstream, that is opposite condition. Then here you will x minus y. Relation between du xy, that is when you have to find the speed in the still water, it will be downstream plus upstream divided by 2. When you have to find the speed of the stream, it will be downstream minus upstream divided by 2. Nothing else. Sir, current and stream dono same. Yeah, current and stream is same. Water current stream. So here, the formula was इसके अलावा कुछ नहीं. Let's start. A person can swim in water with a speed at this in still water, that is, it is x. If the speed of the stream is this, that is this is y. What will be the time taken by the person to do this downstream? First, find the downstream speed. It will be x plus y. So it would be 13 plus 4, that is 17 kilometers per hour. Now you have to find the time. This will be distance upon speed. Distance upon speed. Distance you have to cover 68 kilometers. Downstream speed you have a 17. 17 4 is a 68. That is 4 hours it takes. Next. In 1 hour, boat goes 30 kilometers per hour in the direction of the stream. 7 kilometers per hour against the direction. What is the speed of the boat in still water? Ye kya given? What is it? D, U, X, Y. What is it? 13 kilometers per hour in the direction of the stream. That is, it is speed of a downstream. 7 kilometers per hour against the direction of the stream. That is, it is upstream. But you have to find the speed of a boat. This is x. How to find x? D plus u divided by 2. That is 13 plus 7 divided by 2. That is, it would be 10 kilometers per hour. If I ask you to find the speed of a stream, here in this question I add up, then it would be d minus u divided by 2. 13 minus 7 divided by 2. So it would be 6 by 2. That is 3 kilometers per hour. Next, a boat is rowed down a river this kilometer in this hours and up a river this kilometer in this. So downstream speed would be 28 kilometers per hour in 4 hours. That is, it would be 7 kilometers per hour. 4 7 2. Upstream speed would be 12 by 6, that is 2 kilometers per hour. उसमें given था, इसमें given. Find the speed of the boat and the river. Boat would be x, d plus u divided by 2. It would be 7 plus 2 divided by 2. That is 4.5 kilometers per hour. Y, d minus u divided by 2. That is 7 minus 2 divided by 2. It would be 2.5 kilometers. Got my point? Simple, nothing. Just have to remember these basic formula. बस ये कह देगा तो ये निकाल रहे ऐसे. Otherwise, most of the questions generate regarding this solution. Next, a man can do 6 kilometers per hour in still water. When the river is running at this kilometer per hour, it takes him 1 hour to row a place and back. How far is the place? How far is the place means you have to find the distance. Man can do 6 kilometers per hour in still water. That is, x is given to you 6. When the river is running at this kilometer per hour, that is, it is given you y. It takes him 1 hour to row the place and back. Once he will go
with the stream, once he will come back against the stream. That is downstream timing plus upstream timing is 1 hour. Downstream timing, upstream timing is 1 hour. अब जाओगे तो वापस आओगे ना, एक अगर डाउनस्ट्रीम में जाओगे तो वापस अपस्ट्रीम आओगे. Suppose the distance is d. When you are moving in the downstream, how to find the speed? X plus y. When you are moving in the upstream, you have to find it x minus 1 hour is. So distance x plus y, that is 6 plus 1.2, that is 7.2. D x minus y, 6 minus 1.2, that is 4.8. It is 1 hour. Now come back. Just have to make a simple calculations and you get your marks. Got my point? तो अब देखना कैलकुलेशन की भी टेक्निक रखो. इसमें से 10 ऊपर पहुंचा दो, ऊपर पॉइंट हटाकर. So D into 10 will be taken common. 1/72 plus 1/42. LCM is 144 ऊपर plus 3. D into 10. It is equal to 1 hour. So it is 5. It is 5. 5 plus 10. 5 into 10. 50. So 144 divided by 50. तो 5 से काटना शुरू करो इसको. 5 2s are 10. 44 बचेगा. 8.8 upon 10. That is point इधर चला जाएगा फिर. That is 2.88 kilo. So downstream time plus upstream time taken total 1 hour. Calculation is the only thing I feel which is in this question. आपको starting यहाँ से करनी होगी question यहाँ से. So I have to start a question from here and just have to follow these 2-3 steps. Sir, 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 doubt. Sir, 14, 4.8. 14, 4.8. क्या बोल सकते? इससे कैसे आया वो? Oh my God. What is the formula for downstream speed? X plus Y. So 6 plus 1.2, that is 7.2. Upstream is X minus Y, 6 minus 1.2, that is 2.8. Got it? Next one. Sir, ये D10. Oh my God. Point हटाते हैं. 7.2 बचपन में सिखाते थे, ऐसे पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर ऐसे 10 चला जाएगा. तो इधर से हटाओगे तो इधर से भी चला जाएगा. D into 10, D into 10. So D into 10 taken common. 1/72, 1/40. ऊपर लाया, हाँ ऊपर लाया. Normal language with what you say is in your, है ना. मैथमेटिकल लैंग्वेज तो मैं समझ में नहीं आती है, बच्चों वाली लैंग्वेज समझ में आती है. पॉइंट हटा दो, ऊपर 10 भेज दो. है ना. So this is how you have to do. चलो जी, next. The speed of a boat in still water is this. A boat covers this kilometer and returns in total this hours. देखना बहुत important है. अब उसको total time इतना लग रहा है. Find the speed of the current. Why ये? Cover करता है 100 किलोमीटर. 100 किलोमीटर means 50 किलोमीटर downstream and 50 किलोमीटर upstream. ये याद रखो, ठीक है ना. That is 50 kilometer downstream, 50 kilometer upstream. So downstream time plus upstream time, total time given is 15 hours. So 50 kilometer downstream, this is X, that is 15 plus Y. Upstream 50, 15 minus Y. अब यहाँ पर देखो, when we use the option ना, अभी तो हम लोग basics कर रहे हैं. When you use the option, we use the option technique. We put the value of a y. But generally आजकल लोग पता है कैसे करने लगा है? वो y पूछेगा ही नहीं तुमसे option. वो speed of the current they will not ask. They will ask you what? What? वो कुछ भी पूछ लेगा, कह देगा y का क्यूब बताओ, y का स्क्वायर बताओ, y plus 2 divided by 3 बताओ, कुछ भी पूछ लेगा. So you will not be able to answer without finding the proper value of it, even using the options. If it is given in the option, there is a technique. Take that you put the values from the there. But even if they are not giving the value, you have given a mind. You try to use the mind.
क्या हो सकती है y की वैल्यू? 10 रखना, एक बार 10 रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25, तो 25 से आ जाएगा 10, 20, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 पे 5 पे आ जाएगा 5, 15, ये 12 आवर्स आंसर। आई थिंक टाइपिंग में एरर है, जब मैंने बनाया था क्वेश्चन तो 12 आवर्स इसलिए लिया था मैंने कि वो कैलकुलेशन कर, मैं इसको 12 आवर्स कर लूं, क्योंकि इसमें क्या होगा, आप 10 रखोगे y की वैल्यू, सो इट विल बी 25, ये 2 आ जाएगा, इट वुड बी 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 5 आ जाएगा, 5 से 10 पे बच जाएगा, इसको 12 आवर्स कर लो। आई मेड अ क्वेश्चन, आई नो दिस, 2 plus 10 it would be 2. I just made it somehow, आपको ऑप्शन का टेक्निक समझ, ऑप्शन की टेक्निक याद रखेंगे, whenever you have to, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, whenever there is a lengthy calculation, generally quadratic equation, it occurs like this. What do you have to do? Put the value from the options, or even if the values is not given in the option, what do you have to do? You have to use the general values, you have to use the table concepts, basically table का concept, सादा concept use करा मैंने 10, क्यों 10 plus 25 2 कट सकता है, got my point? So you have to just use the general values, ये बहुत important है, generally questions में बहुत use होता है, and the most important the picture of it comes in the algebra, जहाँ पे हम value putting करते हैं, बहुत important, तो इसको याद रखना कि that you have to use the technique of a value putting. Speed of a boat in still water is this, x is this, speed of a current is this. If a boat goes from place A to B and returns from this A 2 hours in total, find the time taken by the boat to this. Simple question अभी करा, तुम लोग मगर D निकाल लेना, बस उससे पता कर। चलो जी, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेसेस। रेसेस मतलब रेस, when you compete in any competition like this. A race is a competition in which contestants compete among themselves to cover the some distance in shortest length of time. Linear race, in this case, compete in a linear race track like this. You must have seen it in school or somewhere in competition. Circular race, it is in a circular shape. Starting point from where the race starts, winning point at the point where the race ends. It is a start point, it is your end. Got my point? Most important concept of race is this. Suppose there are the two competitors A and B. This running, A beats B by D meters and the time is same. What does it? A beats B by D meter, मतलब A ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, रेस स्टार्ट कर दी, एंड इट हैज रीच्ड एट द एंड पॉइंट, A यहाँ पहुंच गया, एंड इन दिस टाइम B जो है सिर्फ यहां तक ही पहुंचा। तभी तो हमने कहा कि A ने B को D डिस्टेंस से बीट कर, A हैज बीटन B बाय D डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वो D डिस्टेंस आगे था। अब सुनना है आप, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट। टाइम टेकन बाय द A इज टाइम इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द वही, सिंस द डिस्टेंस टाइम is constant, so distance is directly proportional to this. ये कैसे आ रहा है मैं आपको derive करके दिखा दूँ। The time taken by A, time is what? Distance upon speed. Distance upon speed. Distance covered by A is how much? X meter. Speed of A. Distance covered by B is how much? X minus D. That is S. So SA upon SB is how much? X upon X minus. This is how we got this. So distance covered by A upon distance covered by B is equal to the speed of A upon speed of B, equal to the ratio of the distance, equal to the ratio of the speed. यही तो था,
कि टाइम कांस्टेंट और डिस्टेंस का रेशियो बराबर इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जस्ट रिमेंबर दिस बेसिक, ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर। In a race of 100 meter, A gives a start of 10 meter to B. Despite this, A wins the race by 20. This is a racing track. In a 100 meter race, A gives a start of 10 meter to B. मतलब A ने अगर यहाँ से भागना शुरू करा है, so B will start after 10 meter. Just ensure you make a diagram, so the things will be smooth. Despite this, A win the race by 20 meter. मतलब जब ये यहाँ पहुंच चुका था, A एंड पॉइंट पर पहुंच चुका था, so B was 20 meter lagging. B was lagging 20 meter, so B was at this position. Now come again, why time A is equals to time B, so the speed of A upon speed of B is equal to the distance covered by A is equals to the distance covered by B. You have to find the ratio of the speed of, ठीक है ना? Distance covered by A is how much? उसने तो पूरा रेस करिए कंप्लीट 100 मीटर. How much distance covered by B? देखो ये 20 मीटर पीछे है तो 80 मीटर, और लेकिन इसने 10 मीटर भी नहीं कर रहा था, तो ये only 70. That is 7. So the ratio of speed of A to the ratio of speed of B is 10:7. Simple. आगे क्वेश्चन में स्पीड ए की वैल्यू इतनी है, स्पीड बी की वैल्यू इतनी है, ये स्पीड इतनी है, स्पीड ए से कुछ और डिस्टेंस पूछ लेगा, कुछ भी करवा देगा. Just have to remember this basic concept, that is distance ratio is equal to the ratio of the speed. By using this concept, you have to find the ratios of the speed of both, or the distance ratio of the distance covered by both the contestants. Got my point or not? Just let me confirm in the chat. Kindly confirm in the chat box. क्या आपको ये समझ में आया? What I have told, I have briefed you. Yes, sir, got it. चलो. A takes 3 minutes while B takes 4 minutes to complete the race. अब देखो यहाँ पर आप लोग एकदम से इसकी स्पीड का रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है ना? आप लोग एकदम निकाल लो कि भाई कोई डिस्टेंस स्पीड A स्पीड B ये 3 मिनट में कवर करता है, ये 4 मिनट में करता है. आप टाइम का भी रेशियो बोल सकते हो इसको, इसमें डिस्टेंस सेम होगा. देखो A beats B by 60 meter in the race if both start simultaneously from the final length. देखो आप देखो इसमें डिस्टेंस का निकलवा रहा है. A starts from here, B starts from here. A reached at this point some distance of the speed, some distance of the racing track, and B reach at this, that is D minus 60. Got my point? Simple. Now we have just studied that distance का ratio is equal to the speed का ratio. So speed का ratio is 3:4. So speed का ratio is 3:4. A का distance कितना है? पूरा D distance. B का distance कितना है? D minus 60. So 4D cross multiply minus equal to 3D. 3 6 18. ठीक है, ये उल्टा हो गया. 60 minus D आएगा, उल्टा दे देगा. A beats B by 60 मीटर, सही तो चल रहा था. 60 60 40 30. अच्छा एक सेकंड, उल्टा हो गया ना? क्यों? देखना उल्टा क्यों होगा. ये टाइम का रेशियो है ना, 3:4. तो स्पीड का रेशियो इसका इनवर्स हो जाएगा, 4:3. लिख दिया ना, करेक्ट होगा. सुनना फिर से, 4:3. तो इधर आ जाएगा 3D आ जाएगा, ये 4D आ जाएगा, यहाँ पर 4 6 24 आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा. सो माइनस का D माइनस का 240, दैट इज D इज इक्वल्स टू. टाइम का रेशियो था ना यहाँ पर हमारे पास, इतने टाइम में करते, स्पीड का नहीं था. इट वाज नॉट लाइक अ किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड. सो वी हैव टू टेक इट इनवर्स. टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो स्पीड. अभी कितनी बार बता चुका हूँ मैं चीज,
Speed is inversely proportional to time always. Got my point? So dA upon dB, speed A upon speed B, 4/3 d upon dx. So बस आपको एग्जाम में क्या करना होगा, बस ये इतने में खत्म हो जाता है बस कुछ रिमेम्बर, बस डी अपॉन डी सी इतने में, बस इतने से में खत्म हो जाता है। 3443 उल्टा लिख दो, डी डी माइनस 64, बट इट विल टेक टाइम, determination, revision, and your dedication. Remember this. There's a no shortcut tricks. Look at it. There's a shortcut trick of arithmetic. No shortcut trick. Everybody has to go through the same process. That they have to make notes, revise them multiple times, and come to a conclusion that there's just some derived techniques of doing the questions. There's a derived thought process which you have to apply. Derived questions, derived techniques, derived thought process, derived practices, and that will make it. वो जब derived techniques को आप लगाते रहोगे ना कि इस क्वेश्चन को ऐसे ही करोगे, then it will take your less time. Otherwise, it will take your more time. That is the thing, only nothing else. Next, in a race of 100 meter, multiple time means how much time, sir? जब तक इस दिमाग में ये भर ना जाए और क्वेश्चन 1 सेकंड के अंदर ना हो जाए, ठीक है ना, जब तक दिमाग के अंदर ना भर जाए, जब तक तुम्हारा, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड कैपेसिटी, कितना हाउ मच योर माइंड का कैपेसिटी है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, मतलब याद करने वाली बात है, किसी को एक बारी में याद हो जाता है, किसी को 10 बारी, ठीक है ना, और ऑन द स्पॉट दिमाग चल गया, अगर पता चल गया, याद आ गया, यहाँ पे ये टेक्निक थी। अगर मैं तुमसे पूछूं साधारण सी बात की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो बताओ, सिंपल क्वेश्चन बताओ। या है ना, अब तुम एकदम से स्ट्राइक कर गया दिमाग में, अब रिवाइज कर रखा होगा, लर्न कर रखा होगा, तो एकदम याद आ जाएगा कि 1 अगस्त 1920 को, ठीक है ना। अगर नहीं कर रखा होगा तो नहीं आता, चाहे तुमने कहीं से भी पढ़ा हो, चाहे तुमने एनसीईआरटी से पढ़ा हो, चाहे तुमने स्पेक्ट्रम से पढ़ा हो, चाहे सही सर के नोट से पढ़ा हो, कहीं से ही पढ़ा हो, इट विल only be useful if it is in your mind and the less time you are taking to reciprocate it into your useful. ठीक है जी, ये बात, और कोई बात नहीं है, और कोई टेक्निक नहीं है, और कुछ भी नहीं इसके अलावा। In a race of 100 meter, A runs at this. He gives a start of 8 meter to B and still defeat him by 20 seconds. अब देखिए, races of 100 meter. Always make a diagram. He gives a start of 8 meter. तो 8 meter तो ये already हो गया. B यहाँ पे standing है, यहाँ से starting. Still beat him by 20 seconds. अब ये देखना, इसने B यहाँ पहुंचा था, A यहाँ पहुंच चुका था, A was at this one and B was 20 seconds behind. He was lagging 20 seconds. Now come here. What is the time taken by the A to cover the distance? 100 मीटर की रेस है, स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। पहले इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा आपको, सिंपल ले जाकर, क्या ना, 5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करोगे ना, so it will be 100 into 18, 5 5 से 25, 25 से 4 पे कट गया, 4 into 2, 18 4 से 72 सेकंड्स। इसने 72 सेकंड्स लिए, और ये 20 सेकंड इससे पीछे है। अब बताओ, 20, इसको स्पीड निकालनी है ना तुम्हें यहाँ पर। आप लोगों को अगर मैं कहूं, if I would say it is 8 meter, what is the remaining distance? 92 meter, which the B has to cover. Speed of the B would be distance need to be covered by B, time taken by the B. 92 meter is need to be covered, and the time what is it is taking, 72 सेकंड इसको लग रहे थे, और इसको 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, so it would be 72 plus 20,
that is 92 upon 92, that is 1 meter per second is the speed of a bee. Got it or not? बी को डिफिट क्यों करा जाता है? वो बस क्वेश्चन सिंपल बनाने के लिए हम लोग ऐसे बना रखा है, ऐसी कोई जाती दुश्मनी नहीं है बी के साथ। चलो नेक्स्ट, इन a 1,000 meter race, A gives a start of 100 meter to B and beat her by 200 meter. In a same race, A gives a start of 100 meter to C and beat her by 300 meter. In how many meters, by how many meters would B beat C in a 50 meter race? है ना धमाकेदार सवाल है। सर देखो 1-4, हाँ 1 and 4, एक ही अगर आप निकालोगे तो वो आ जाएगी आपकी, ठीक है जी। चलो जी, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर योर क्लास। एक उसका हो गया, एक इसका हो गया, ठीक है ना। हिंट मैं तुम्हें देके छोड़ता हूँ इसका थॉट प्रोसेस कि तुम्हें डिस्टेंस का रेशियो बनाना। आई एम गिविंग यू टू मेक यू जस्ट मेक द थिंग्स इजियर फॉर कि आप लोग एक बार इसका यूनिट किलोमीटर नहीं आएगा, नहीं वो यूनिट किलोमीटर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने इसको पहले ही कन्वर्ट कर लिया था ना, 5 किलोमीटर पर आवर को हम लोगों ने पहले यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया था सेकंड्स में, तो इवेंचुअली आंसर इसी में आएगा। आप हाँ ये चीजें अपनी अडॉप्ट कर लो, जस्ट मेक इट अडॉप्ट कि आप लोग किलोमीटर ईदर गो विद द किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। जनरली क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड को ही वो लोग प्रेफरेंस देते हैं टू मेक दिस द लेंथ और कैलकुलेशन। तो आप लोग उसमें आप लोग जनरली मीटर पर सेकंड से। सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव फॉर टुडे। अब मैं एक बार रिकॉल करा दूं क्योंकि आज हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी है। सो बेसिकली ट्रेन, बोट एंड रेस। इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लास में वो भी देखना, वैसे तो मैं कल और कराऊंगा ये भी तो बहुत सारे, ठीक है ना, वो भी देख लेना। सो ठीक है जी, टुमारो वी विल प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ऑन वैरायटी, सब पे करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी पूछे पूछे। सर ये पीडीएफ एनोटेशन के साथ नहीं मिल सकती क्या? इस एनोटेशन के साथ? यस सर, इससे क्या है कि वो जो कोई डाउट रह भी जाए ना तो एनोटेशन देख के क्लियर हो जाता है। गुड पॉइंट, आई विल डिस्कस। तो क्या मैथ में इम्पोर्टेंट है और बाकी में तो फिर भी जरूरी नहीं है। हाँ वो तो ऑफ कोर्स आई विल डिस्कस। थैंक यू सर। So tomorrow we will catch up for your next class of speed, distance, time class. Don't forget to revise the things. Don't forget to revise the techniques. मैं थोड़ा क्वेश्चन इसलिए करा रहा अभी इसमें इनमें ताकि कल ज्यादा करा सकूं, ताकि आप लोग रिवाइज करके आओ। So